everyone, this is Rakshita. Welcome to my channel Pharmacy Hunt. Today I came up with the video of third lecture of chapter 2nd, which is Absorption by from unit 1st. Please like, share and subscribe my channel. If any questions or doubt regarding the topic, you can ask me in the comment section. Please keep supporting guys. In my last video, I discussed about the introduction and function of drug absorption, route of drug administration, gastrointestinal absorption of the drugs, and structure of cell membrane. Today in this video, I am gonna explain mechanism of action of absorption. Let's start our topic. Mechanism of action में 3 broad categories involved है. Let's first concentrate on this diagram. These are the categories of the mechanism of action of absorption. First is transcellular या intracellular transport. Second is paracellular या intercellular transport. Third is vesicular transport या corpuscular transport, also called as endocytosis. So let's discuss about these categories. First transport है transcellular transport, which is also called as intracellular transport. Definition है the passage of drugs across the gastrointestinal epithelium. Meaning intra means inside, cellular means cell, which means inside the cell. जो ड्रग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम के इनसाइड से पास होता है उसे ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. डेफिनेशन का मतलब तो आप जान गए. इट इज़ द मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट. इस ट्रांसपोर्ट में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है. दे आर फर्स्ट वन इज परमिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन. मीन्स ड्रग को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से पेनेट्रेट होना. Second one is movement across the intracellular space. It means drug को cell के inside से move होना. And the last step is permeation of the lateral or basolateral membrane. This means drug को lateral membrane, which means the site of contact between epithelial cells or basolateral membrane, which connect the epithelial cell to the basement membrane. इन 3 स्टेप्स का मतलब है पहले जब ड्रग्स जाके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट होता है, फिर पेनेट्रेट होने के बाद वो ड्रग सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड से मूव होते हुए लैटरल मेम्ब्रेन या बेसोलैटरल मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट होता है. ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट में वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व है. दे आर पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. First, we will discuss about passive transport process. It is defined as the transport processes which do not require any energy other than that of molecular motion, which is Brownian motion, to pass through the lipid bilayer. This means passive transport process में drug को lipid bilayer से पास होने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, पर molecular motion मतलब Brownian motion की ज़रूरत है. This is classified into following types. First is passive diffusion, second is pore transport, third is ion pair transport, fourth is facilitated or mediated diffusion. The next process is active transport process. This requires energy from adenosine triphosphate to move drug molecules from extracellular to intracellular, which means drug को सेल के बाहर से अंदर जाने के लिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP से एनर्जी चाहिए. देयर आर 2 टाइप्स. दे आर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट एंड एंटीपोर्ट या काउंटर ट्रांसपोर्ट. Second category of the mechanism is paracellular या intercellular transport, which is defined as the transport of the drug through the junction between the gastrointestinal epithelial cells. It means inter means कोई भी 2 सब्सटेंस के बीच में से जाना. डेफिनेशन का मतलब ड्रग्स को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियल के बीच में से मूव होता है से पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. इस पाथवे का इम्पोर्टेंस लेस है. 2 paracellular transport mechanism involved in drug transport.
First is permeation through tight junction of epithelial cells. मतलब बेसिकली इस प्रोसेस में ड्रग्स जाके एक्वियस पोर से भी बड़े पोर्स में जाके इन्फ्यूज होता है. कंपाउंड्स लाइक इंसुलिन और कार्डियोग्लाइकोसाइड्स इस मैकेनिज्म से होता है. सेकेंड इज persorption, in which permeation of drugs through temporary openings formed by shedding of two neighboring epithelial cells into lumen. This means lumen में जब two neighboring gastrointestinal epithelial cells shedding होके temporary opening होता है तब वहाँ drugs जाके infuse होता है. This is persorption. Let's move to the last category of the mechanism of action is vesicular या corpuscular transport. It is also called as endocytosis. Like active transport, these are also energy dependent process but involve transport of substance within vesicles into a cell. It means ये भी energy dependent होता है पर इसमें ड्रग को ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर से होता है. This is classified into two categories, phagocytosis and phagocytosis. These are the three categories of the mechanism of action of absorption. I hope you all understood the topic. If any questions or doubts, you can ask me in the comment section. Thank you guys.